guys, so I wanted to show you how to basically the approach to making a meme and how to make it fast. So basically, I have this idea of making a meme on this particular dialogue from Chandni Chowk to China. So वहाँ पे there's this scene जहाँ पे this dialogue comes is a very popular one. So now I need the background image, the proper background image to go with it. So what I do is first thing that I do is I go to Google, I search for this dialogue. Okay, and all I find is basically and if I go to images, I find a bunch of images that are not relevant. Okay, so what I then realize is I need to copy this entire dialogue and paste it on a generic Chandni Chowk to China image where it fits. So ठीक है, so ये वाला image for example इसमें पहाड़ का image है, this is not very useful. So what I will then do is I'll go back and I'll search for something like Chandni Chowk to China teaching Kung Fu. Now, here I find an image where it could be a fit because it looks like this guy, the Kung Fu master, is actually teaching Akshay Kumar. Okay. Next thing that I need to see is basically, this image is too small. Okay. So, what I need to do is I need a bigger image size. Okay. So, यहाँ पे I search on Google and I find that यही size available है. ठीक है. So then I need to look for some other image. अगर नहीं मिलता है तो उसी size पे I can create the meme. ठीक है. But ideally image का size अच्छा होना चाहिए. ठीक है. If I just search for teaching, ये भी नहीं मिल रहा है. Let's search for the teacher's name. Chalk to China teacher name. ठीक है. Who plays the teacher? अगर मैं कास्ट देखता हूँ, better way to search is the cast. ठीक है. The Gordon Liu. Gordon Liu was a teacher. नहीं, Gordon Liu was the whole Hojo. Okay, and I need the teacher. So inspector. So Roger Yan. Roger Yan. अक्षय कुमार. So basically I need a shot जहाँ पे ये दोनों साथ में हों. ठीक है. If I go to images and यहाँ पे ये दोनों साथ में कहीं पे हैं, नहीं मिल रहा है. ठीक है. Okay, so in that case I can look for the video of this scene. ठीक है. If I can find on YouTube, and वहाँ से I can snap and cut the YouTube video. So यहाँ भी नहीं मिल रहा है. ठीक है. So next thing that I'm gonna do is I'm gonna go search on Google. ये कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी. जस्ट वॉच पे जाकर के you can search. जस्ट वॉच चांदनी चौक टू चाइना. ठीक है. OTT पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये. ठीक है. फुल मूवी यूट्यूब पे देखें. लास्ट फाइटिंग सीन. Do I have a scene? Do I have a scene? Do I have a scene? जहाँ पे ये दोनों साथ में हैं. नहीं,
ये सीन में नहीं है. Then going back, I do remember वो वाला डायलॉग था, but OTT पे है नहीं, so how do I find it? नेक्स्ट वेज, अगर या तो मैं ये वाला इमेज यूज कर लूँ जो मुझे मिला था पहले. ठीक है. या फिर मैं बड़े इमेज के लिए so yeah, this is a decent image size. I copy it here, and then what I'll do is I need to add some space on top and bottom ताकि I can put the space for the meme. ठीक है, and I put it here. Next thing is to do is to add some space at the bottom, क्योंकि bottom का जो मेरा text है वो बहुत लंबा रहने वाला है. So I will add approximately itna space to the bottom, then add the background. ठीक है. एक लेयर ऐड करके मैंने बैकग्राउंड ऐड किया ना. दिस इज सम लिटिल बिट ऑफ फोटोशॉप नॉलेज दैट यू नीड टू हैव इफ यू नीड टू बी एबल टू क्रिएट क्विक एंड एक्यूरेट मीम्स. ठीक है. Next step, what I'll do is I'll go to IMG Flip now instead of Canva or all the other websites. So yes, as I was mentioning, I'm going to use IMG Flip to create that meme. So सबसे पहला step would be to फाइंड. हाँ, ये मेरा इमेज है जो मैंने अभी अभी वहाँ से बना के डाउनलोड किया है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज इसका नाम कॉपी एंड इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड, मेक अ मीम, अपलोड अ न्यू टेम्पलेट, अलाउ दिस टेम्पलेट टू बी पब्लिकली एक्सेसिबल. इमेज को करते हैं सिलेक्ट एंड दिस इमेज इज नाउ हियर. इसको व्हाट आई एम गोना कॉल इट इज Johnny Chalk to China. एक मूव 10,000 times. ठीक है. एंड दिस गोज अपलोड. नेक्स्ट स्टेप में इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई. ओके, नाउ जो मेरा मीम का टेक्स्ट है दैट इज व्हेन शी स्टार्ट्स crying. ओके. एंड ये वाला टेक्स्ट जो है ये बॉटम में डालने वाला हूँ मैं. ठीक है. एंड ठीक है. एंड व्हाट आई जस्ट रियलाइज्ड इज ये वाला इमेज विल नॉट गो बिकॉज यहाँ पे जो है दिस इज नॉट जस्ट द सावलिन मास्टर, इज टॉकिंग टू अक्षय कुमार. तो एक शी वाले इमेज में ये फिट नहीं होता. दिस डज नॉट फील लाइक द बॉयफ्रेंड इज सेइंग दिस. सो इंस्टेड व्हाट आई एम गोना डू is I am going to search for another image, Roger Yanka, Johnny Chalk to China. ठीक है. And I'm gonna look for images and in movie shot. मुझे ऐसा चाहिए जहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उस टाइप का जो शॉट है. ठीक है.
Hmm. Teacher. यूट्यूब पे जा करके वीडियो ढूंढना पड़ेगा. यस. इसमें शायद कुछ सीन मिल सकता है. And I think this will be appropriate. टॉप पे ऑलरेडी स्पेस बना हुआ है. बॉटम में मुझे डालनी पड़ेगी. ये मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड क्रॉप करके. And this should be enough space. Background color and export. And here goes दोबारा से अपलोड. टेक्स्ट को रख लेते हैं. ठीक है. एंड अपलोड न्यू टेम्पलेट. ठीक है. And here if I don't if I press generate, then what is going to happen is it's going to add a watermark. I don't need that. So what I'm going to do is I'm going to press save instead, and this will save my meme. And इसको फिर मैं अपने blog post में I will drop here. ठीक है. And ये हो गया मीम मेरा ऐड. ठीक है. एंड दैट्स इट. ये आपका जो है मीम ready है. And then I'll add a couple of more examples, but this video is to show you how you need to approach memes. So there are a few things that you need to keep in mind. First thing is to use the right tool. So use IMG Flip instead of a Canva or something like that. Second thing is create it as a template in IMG Flip, because otherwise what is going to happen is you will lose it. So for example, here I did not add the image as template. So basically what has then happened is वो as a template available नहीं है यहाँ पे. What I'm going to call it though is now I'm going to add it as a template. And when I add it as a template, so इसको मैं बोलूँगा चांदनी चौक टू चाइना. ठीक है. एंड ये पार्ट मैंने यहाँ पे इसका नाम कॉपी किया. सो आइडिया इज
10,000 मूव्स प्रैक्टिस, ये सारे नाम मैंने इसको दिए यहाँ पे, एंड इसको अपलोड जब मैं करता हूँ, देन व्हाट इज गोना हैपन इज इट इज गोना क्रिएट अ टेम्पलेट आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड जो भी मैं टेक्स्ट वहां पे सेव करूंगा, देन आई कैन मॉडिफाई दिस टेम्पलेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अदरवाइज व्हाट इज गोना हैपन इज, जो मैं टेम्पलेट जो मैं इमेज अपलोड करता हूँ, इफ आई नीड टू मॉडिफाई, देन आई नीड टू रीफाइंड एंड री अपलोड। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर माई मीम्स में मैं जाता हूँ, ये यहाँ पे इमेज आ गई, टॉप पे मैंने ये टेक्स्ट डाल देना है, कहाँ गया, टॉप पे ये टेक्स्ट डाल दिया, बॉटम में ये टेक्स्ट डाल दिया, एंड देन ये 4 लाइन्स का बॉटम टेक्स्ट है, एंड ये डाल करके ये मेरी मीम रेडी हो जाती है। इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, एंड दैट्स इट, आई कैन सेव दिस टेक्स्ट बॉक्स सेटिंग्स। ठीक है, एंड यहाँ से ये मीम का मुझे टेम्पलेट जो है वो मिल जाता है। अगर मुझे आगे कहीं भी कुछ और कॉन्टेक्स्ट में इस मीम को रीयूज करना, आई कैन जस्ट डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, you need to know, to recap, you need to know how to Google. So as you saw, it took me a while because this meme was so off, किसी ने इससे पहले बनाया नहीं था इस पे, तो इसलिए मुझे गूगल करने में जो है थोड़ा टाइम लग गया। but that's perfectly okay because if you find the right image and if you create the right meme, वो impact create करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स जो है वो नेसेसरी है, बिकॉज विदाउट देम व्हाट यू गोना डू इज यू गोना बी हाई एंड ड्राई, एंड आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल यू नीड अ लिटिल मोर स्पेस इन दिस मीम, नाउ हाउ यू गोना डू दैट। So यहाँ पे what I did is I took that image that I found on Google, then I went to Photopea, which is like an online Photoshop, and यहाँ पे I added a little bit of space on top and on the bottom, so that I get the just enough space to create my meme. ठीक है, so and final thing is, you need to take care of the contrast. So for example यहाँ पे black बैकग्राउंड एंड कलरफुल बैकग्राउंड है, तो उसके ऊपर में मैंने व्हाइट टेक्स्ट रखा हुआ है, बट अगर बैकग्राउंड व्हाइट होता तो मैं इसको ब्लैक रखता। एंड अगेन रीडेबिलिटी के लिए इमेज का एक मिनिमम साइज विच मेक्स इट रीडेबल, वो जरूरी है। तो ध्यान रखें कि जो है इट शुड नॉट बी हार्ड टू रीड, otherwise basically it will not engage because customer has to, or the user has to spend too much time in trying to understand कि what is the message। ठीक है, सो रीडेबिलिटी होनी चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखो। फाइनल थिंग इज बेसिकली आपके दिमाग में आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, बट इन जनरल क्या होता है कि दैट आइडिया कुड बी रियली रियली बैड फॉर द एंड यूजर, एंड दे माइट नॉट रियली बी इंटरेस्टेड इन इट, या समझ नहीं आ रहा है, या इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। द ओनली वे टू फिगर आउट वेदर इट वर्क्स और नॉट इज टू test it with the right audience, and if it does not get the right reactions, then it is not the right meme. So basically good memes get a reaction, get the right reactions from the audience, otherwise bad memes, jo basically ineffective memes, they don't get the right reaction। So whether it's effective or not, ये test करके ही पता लगता है। You put it in front of the right audience, see how they react, and until you get it right, you either iterate or you chuck that idea and move to the next one। Yeah, so that's overall sort of tutorial on meme marketing. I hope that helps.